When I fell in love first time, and got married, and first time chuda, first time this that, it was beautiful. या तो कोई चोरी चकारी की होती, या कुछ गलत किया होता, या किसी गलत इंटेंशन से किया होता कि हम मतलब जाएंगे और पैसे लूट के आएंगे, ऐसा कुछ थॉट होता. So that it is so unfair. और ऐसा नहीं कि मैंने छुपा के रखा है कि मैं तो भाई सिंगल हूँ, दुनिया को पता, जो मुझे जानता है वो जेरन को जानता है. करेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं थी या क्या था. सो बहुत इंटेंशनली आप आए हो हर्ट करने. सब फ्रॉड था, ये मुझे आते ही समझ में आ गया. बट मुझे शायद वहाँ रहती शायद ना पता चलता, क्योंकि वो तो मुझे एक मैरिज काउंसलिंग के लिए भी लेके गए कि आपके लेवल की एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे तो भाई ज्यादा हो गई थी, मुझे ज्यादा भाई. Did Stalin help you? कौन? No idea who you're talking about. Now उस इंसान का कोई मैसेज कॉल, जेडन ठीक है, मैं ठीक हूँ, हमारा बड़ा सिंपल मैथ्स है. It's literally 1 + 1 is 2. नहीं यार दिलजीत, we would love to cast, but they're not looking for television actors. So when I hear that, I of course personally get offended because it's my craft and I'm extremely proud of. जब काम आता है तो बहुत सारा साथ में आता है. जब नहीं आता है, there is not a single call coming. हम वेट करते हैं यार, कॉल कर लो, कोई तो कर लो, नहीं करते. But I want to ask you a direct question, that was second time was a love or it just finding a father? It was finding a family. I think love, आप एक एज के बाद love की definition बहुत बदल जाती. When I had Jaden, that was love. That was butterflies and I यार उसने ये बोला, अरे हमने चाय पी, अरे हमने ये किया, अरे वो तो ड्राइव पे गए, उसने तो हाथ टच कर लिया, and all of that happened when I fell in love first time. And got married, and first time chuda, first time this that, it was beautiful. Then after the divorce, I was literally 6, 7, 8 years, I was a divorcee, single parent, with a right from a 3-month baby to a 9-year-old baby. It was a journey as a single parent, wanting a family, because that is something that I wanted, didn't happen. I wanted that so bad. Wanted a father, wanted a husband, I wanted romance, I wanted a family, I wanted love, I wanted everything. Why not? I'm a good girl, my child is lovely. Yeah. So I think more than finding only love, it was finding a family. So जब oh wow बेटियां हैं, अरे wow, you'll be like, oh I have a son now, I have a daughter now. मैं इतने loudly बोलती थी ये चीज़ को because I used to love that concept कि अरे यार पूरा family complete हो गया. Yes, of course. So that was something that I really looked forward to. So yeah, it was more of practicality. Of course, love कि यार बोल रहा है हाय मैं तो हसल करता हूँ, मैं तो मैं तो ये करता हूँ, I'm a single father. उन्होंने कहा हाय कितना यही तो मैं भी करती हूँ. तो obviously प्यार developed, which is why the hurt was. क्योंकि अगर सिर्फ डेट करना है या कुछ करना, वो तो बहुत इजी है. Like the easiest thing to find is like a man, or for a man a girl. वो तो कोई बहुत big deal आज भी नहीं है. To find that setup, to find उसके लिए अफ्रीका, नायरोबी कहाँ है, जाके देखो वहाँ बेचारे अभी भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को. It's a good place. Right. But to have that house जहाँ पे पहले सोफे लगा रहे हैं, I'm painting. I know, I saw. So those things were something that was like a dream. It was beautiful. Yeah. Whatever that I lived from my side, because it was so out of love. Right. I think that side was probably very, very unfortunate to not have experienced the love they could have got. But yeah, so it was that. But I feel दिलजीत कहीं ना कहीं वो अपने आप को खो दिया था आपने, मुझे ऐसा लगता है. Did you forget yourself, your own? I was so excited. I was, something that you dream of for years, and it happens. Suddenly आप बोल रहे हो कि यार मैं एक जॉब ढूंढ रही थी, कोई आपको सडनली आके दे दे पे चेक, ये लो पकड़ो, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ये लो, you're doing your dream job. Absolutely. You can't contain it. It is so, like I was like this child, like people are यार बहुत ज़्यादा कर रही है, but I was feeling that ज़्यादा was my true emotion. Yes. To wear that chud and saying, what, this is happening again in my life. Excuse me. Like I was actually so excited. Happy. Yeah. And I don't think I needed to mellow it down. Yeah. Hi, thank you. Oh, lovely. Thank you. So it was that, I was feeling that excited. And I'm not going to be apologetic for feeling
कि So true. आपके लेवल की एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे तो भाई ज्यादा हो गई थी, मुझे ज्यादा भाई. हाँ. I was wrapping up my life. I thought कि अब से Jaden will say we'll have somebody to pick up from school and हम as a family कहीं travel करेंगे, which I have only seen that for years and years. कि मेरे friends जा रहे हैं as a husband wife अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं. I never had that. So for me to कि even I'll have that, as a family we'll travel. So that was something that was too exciting. So yeah, I felt exactly like that. I felt like a child, over excited, अरे बहुत शेयर किया, इसको नज़र लगी होगी. नहीं, मुझे आज दुख है तो भी मैं शेयर करूँगी भाई. नज़र लगने की वजह से कोई इंसान अपनी नियति खराब नहीं करता. That man or that person or that whole setup was fraud, was a con man from the beginning. तो वो कहीं भी जाके, वो आज कहीं भी जाके अपने आप को फिट करेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ पंगे होने ही होने, क्योंकि इंटेंशन सही नहीं. अगर मुझे कोई वाकई में अच्छे इंटेंशन का इंसान मिल जाता, I think he could have been a hero if he was with good intention, और वाकई में वो फैमिली वाला बंदा होता. तो अगर वो सपोज जेडन के साथ एक्चुअली में बहुत अच्छा करता, मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि हमारी इंडस्ट्री उसको कितना प्यार करती. या अगर वो जेडन को या मुझे जेन्यून अगर होता, अगर रियल होता, और हम एक्चुअली आई वुड हैव बीन लिविंग दैट एक्साइटमेंट इवन टुडे. मैं अगर अभी आती और अगर हमारा इंटरव्यू अभी वैसा हो रहा होता, I think हम सिर्फ उसके बारे में बात करते कि यार क्या फादर है, यार क्या किया. I know you. That's why I told you that you were losing. I felt that you were losing yourself more. 100%. And you were just, everywhere I used to say that you were together, Paps are papping them together, and he went famous as well. And he asked me, oh, I didn't know you married for your son. I was like, good question. कोई अंधा लंगड़ा लूला भी बता देगा कि भाई ये अपनी बच्चे के लिए ज्यादा एक्साइटेड है. मैं अपने लिए भी थी. I'm not taking that away. But like I said, if he was not even 1% honest in this relationship, he could have been a universal hero. I feel कि यार इसने क्या देखा है यार जेडन को, ये क्या करता है यार. मैं तो obviously I would have died over the girl and done everything that I could. Because your priority was always at Jaden first. 100%. Right, and Jaden was enjoying. There were times he was enjoying. I saw the videos. Yeah. But thankfully you came out, and you came out very strong, I feel. I did. I think 3-4 महीने से जो देखना शुरू किया, जो समझना शुरू किया, I got really freaked out. और लूजली ये भी बोला गया कि बहुत डेंजरस जगह है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो आपके फियर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं. एंड दैट आई थिंक मल्टीप्लाइड, एंड आई फ्रीक्ड आउट. एंड व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज वो फियर नहीं था, ये सच था. ये सब एक पुटअप था, ये सब शैम था, ये सब फ्रॉड था. ये मुझे आते ही समझ में आ गया. बट मुझे शायद वहाँ रहती शायद ना पता चलता, क्योंकि वो तो मुझे एक मैरिज काउंसलिंग के लिए भी लेके गए. बाद में पता चला जिसने काउंसलिंग ली है वो तो मतलब जो हमारी उनसे जुड़े थे. हाँ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रेवलेशंस हुए. कभी करेंगे इस बारे में बात. लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया कि शिट, ये तो फ्रॉड बहुत लेवल का था भाई, ये सिर्फ एक लेवल का नहीं था. But you feel lucky today, or you're safe? I feel so lucky. I feel so oh my God, God must really love me and Jaden to have shown me those clues. And because obviously it was very difficult for me to decode, क्योंकि आप एक अलग कंट्री में हैं, हर चीज़ नहीं है ना. घर, लोग, इंडियंस आपको हर दूसरे कहीं किसी कोने में मिल जाएंगे, बट वहाँ पे लैटिन भी है, यूक्रेनियन भी है, अमेरिकन भी है. तो इट वॉज क्वाइट स्केरी, इफ आई हैड नॉट फाउंड आउट. और मैं एक्चुअली अपनी गट फीलिंग पे आई, मैं श्योर नहीं थी. व्हेन आई केम आई वाज नॉट श्योर. मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद मैं ओवर सोच रही हूँ, आएगा, सही बात हो जाएगी. बट thank God. Thank God. God is very kind. Absolutely. Have your food. No. कि पता ही नहीं क्या बोलना है, मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा है. पहले समझ में तो आए. तो राइट फ्रॉम सेइंग कि ये तो शादी नहीं है, तो कल्चरल इवेंट है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ले आए, फिर जो भी उन्होंने किया, मैं तो समझने में ही लगी थी. बट 6-7 महीने बाद समझ में आ ही गया कि भाई. बट मैरिज सर्टिफिकेट का क्या लोचा था? दैट मैरिज इज नॉट देयर. I mean, हम लीगली मैरिड नहीं है. आप लोग मैरिज में आए थे कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ, मेरी शादी हुई थी कि हम इवेंट कर रहे थे? इवेंट में बॉम्बे अड्डा में करती. You know what I mean? Of course, बॉम्बे अड्डा में कर रहे होते हम इवेंट्स. We all were there. Did you come for a marriage or you came for an event? Our camera was there. हाँ, but did he come for a marriage? Or did he come for an event? We covered it. We covered the whole marriage. वो बड़े conveniently, मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मुझे नहीं पता. मगर आपकी मम्मा बड़ी श्योर है
कि ये वाला धागा इस टाइम पे लगेगा, ये सुपारी इस समय पे देगी, पंडित जी क्या करेंगे, कौन सा मंत्र, कौन सा तब तो आप बड़े श्योर हो, बाद में सब But did you met their laws? Met your laws? no vanished. Oh. Oh, whole sham. No. बड़ा कलेक्टिव शैम कि पहले आ गए मेरे डैड मॉम के पास फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग, नहीं भाई साहब हम पे ट्रस्ट रखो, जेडन हमारा पोता है, हम हैं, अगर कुछ भी होता है हम हैं, और फिर आप कौन मैं कौन तो मुझे लगता है वो भी देखो उम्र में बड़े हैं, राइट, इट जस्ट कोई भी रीजन हो एक्चुअली तो गलत है, मतलब मैं अगर इतना गलत कर रही होती घर में सबसे पहले छित्तर मुझे पड़ता। I know you come from very strict family. 100%, अगर मैं इतना एथिकली किसी को गलत कर रही होती है, if I was the man, even as a girl, और लड़कियां कौन सा आजकल कांड नहीं कर रही भाई, लड़कियां भी लेफ्ट राइट एंड सेंटर में चीजें कर रही हैं, तो as a girl if I was wrong, my parents would be the first one to cut off and फट करके मारते और immediately उसके साइड में चले जाओ। My parents would have done that. I know. So on that level, I feel very let down by all those things you said. मतलब आपने देखा है कि मेरा पूरा परिवार आया था, मेरे पूरी, और आपका बेटा ये बोल रहा है, और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप आके बोलो कि दलजीत ये एक तरफ तू सही है, हम भी आए, हम भी थे, we are the ones who got you as a बहू, सही गलत you are right. Absolutely. तो बात बनती, तो भी बात बनती, बट दे जस्ट चोज कि चल यार छोड़ो, पल्ला छोड़ो, हो गया हमारा जो होना था हो गया। But how did your family supported in this and your friends around? यार my family has been a rock star. My family third month only they started saying कि जो मैं उनको बोलती थी मुझे ये दिख रहा है, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि वाकई में है, बोलते थे नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैंने, और मुझे ये भी लगता था कि यार मैंने कभी फैमिली लाइफ नहीं जी, यू नो Jaden was 3-4 months old जब से आई हैव बीन अलोन, ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बोले नहीं ये बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन है दीपा, मुझे दीपा बोलते हैं घर में। मैंने अपने आप को भी आई थिंक उस जजमेंट पे रखा 3 महीने से, बट मेरी फैमिली हमेशा ये बोलती कि तू आ जा, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेट हिम कम एंड सिट विद अस एंड टॉक टू अस, इट डजंट मेक सेंस। आई थिंक 10th मंथ तक तो मैं बहुत ही डर गई थी। And your friends? सब मुझे जो जानते हैं सब यही कहते हैं कि आई एम वेरी लकी, आई हैव हैड सपोर्ट फ्रॉम द डे, एंड वहीं से आई वाज इन टच विद अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे ऑल स्टूड बाय मी एंड टिल टुडे एज वी स्पीक। यू नो इट्स वेरी सेक्सी व्हेन समबडी हैज फॉलन। आप ही का कोई बंदा कीचड़ में गिर गया, करेक्ट, चोट लग गई, अब आपको कीचड़ से भी डील करना है, चोट से भी डील करना है, शिट फर्स्ट एड भी कराना पड़ेगा, लेकिन आप वो करा के जब उसको ठीक करा के फर्स्ट एड करा के ले आओ और वो फिर से शाइन हो जाए जी, उस जर्नी को लिव करना इज सो सेक्सी। कहाँ कहीं अपने भी दूसरे देखते वो शिट यार कौन जाएगा उस कीचड़ में, यू नो, अच्छा लग गई, चोट लग गई, दूर दूर से तो ऐसे भी लोग होते हैं, बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट जिन्होंने कीचड़ में खुद जैसे चल किसी की क्या मजाल, एंड दैट फॉर मी इज कि जान मांग ले यार, अब तो तू सीधा जान मांग, आई गिव इट, यू नो, it, and those relationships are for life, and I'm very fortunate because of that. Right. But now you're mentally okay, I feel, right? Emotionally Getting there. Getting there. I think I mean I'm still speaking about it. मैं अपने अब subconscious में भी देखती हूँ कि shit I'm still speaking about it, क्योंकि it's not healing तो खैर बहुत ही लंबी जर्नी है, but I'm better. I breathe better. अब मुझे जो यहाँ पे पेन होता था वो आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू अ क्रॉनिक डिप्रेशन, वो ठीक हुआ, थेरेपी ली, उन्होंने मेंटली मुझे बहुत सारे टूल्स दिए, जब ये होता है ये सोचना, ये तुम सोच रही हो क्योंकि ये है, तो कई रीजनिंग्स दे दे के उन्होंने मुझे वहाँ से उभारा, दैट हेल्प्ड, सो इट्स गोइंग ऑन, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, एंड क्लियरली इट्स स्टिल देयर. It's so there. Like I want to talk about work. I want to talk about what I'm doing. I'm having such a I have like great meetings today. I'm like really looking forward to a lot of things. But it is there. Now it's gonna probably जाते जाएगा. I hope someday. But because this is the episode of Season Unstoppable, I wanted to talk about things you dealt with it, and there are many people who deal with it, right? Yeah. And they do not know how to come out of it, how to speak about it. Yeah.
please give them a bit advice or a way how they can deal with such situations. You know, I'll give you an example of somebody I tie Rakhi to today. And I've never had a brother. As in, I don't have a blood brother. Huh. Varun and Akshay are the only two people that I tie Rakhi to for years now. Huh. So they are my Varun Rakhi. Sopti. Huh. Oh. Varun and Akshay, I've been tying Rakhi to them for years now. Wow. Wow. So if I say brother, it's them. Huh. चैन 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 करना है तो it's वरुण सुन ऐसा हुआ या अक्षय ऐसा हुआ. So Akshay is also like really close to me. Akshay, yeah. But in this phase, I met someone. His name is Gaurav Saxena. I met him. He works in the same company, but इसी के इस बंदे के ही company में काम करता है, but different countries altogether. Okay. Parallelly, he was also going through a crazy. As a man, I'm saying. I'm giving you an example of a man. He was going through craziness. He met me and I realized shit. We both were literally. मतलब when I met him, I'd met him years back. तब वो ठीक ठाक थे. इतनी सी कमर, इतना सा ये. और मैं मिली ऐसे. My way of dealing with it was completely ulta. I realized for both of us, the problem was that we were in denial कि actually ये हो गया. And then he started speaking out. He started putting it. I said, being a man or a woman is not the thing. लड़कियां भी बहुत खराब करती हैं, लड़के भी करते हैं. It is not gender specific. Absolutely, yeah. He started speaking. He started healing. He is also somebody I tie Rakhi to today. And he has. अभी आप उनको देखो, physically he looks better. Mentally he's in a better place. So to all the men and women, to answer your question. Yes. If you're going through something, do not care about मैं इसको बताऊंगा तो क्या होगा, इसको बताऊंगी तो क्या होगा. If something is wrong, speak up. Whether it is going to the police station, whether it is going to your friend, whether it's going to your immediate family, it could be anybody. Speak up. क्योंकि जब आप बोलते हो, वो power आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो मेरी हेल्प कर पाऊँ, बट बोलने से पावर आती है. बोलने से आपको अपने ट्रूथ की पावर आती है. एंड समवेयर यूनिवर्स हेल्प्स. सो स्पीकिंग अप इज वेरी इम्पोर्टेंट. जहाँ ये सोच लिया कि पड़ोसी क्या बोलेगा, खत्म, कहानी खत्म. यू विल, आपको और बोलेंगे और करेंगे, फिर आप और डरोगे, फिर आपके साथ और होगा. क्योंकि जैसे ही आपने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि यार एक ही तो थप्पड़ पड़ा यार, कोई बात, फिर दूसरा पड़ेगा, फिर चौथा पड़ेगा. मार्क माय वर्ड, लाते भी पड़ेंगे, घुसे भी पड़ेंगे. सो पहला हुआ स्पीक अप and ask for help. Do not shy away. It could be an NGO, it could be a men helpline, it could be a women helpline. Speak up. Absolutely correct. Very true words. You said recently in some interview that Mumbai से आप घबराहट होती है. Why that? Because you have been there since 20 years, you have worked here. Then why? I think sometimes you're in a place where you mentally prepare yourself कि अब यहाँ से नाता छूटा और कुछ और आपने शुरुआत की. तो जब आप किसी, जैसा आपने कहा, यहाँ पे मैं 20 साल प्लस रुकी हूँ. So I have a lot of emotions attached to this place. So it took a lot of guts to pack my things and leave. So जब वो transition हो रहा था, that time I was mentally prepared कि अब मैं सिर्फ आके मिला करूँगी. Because it's for life, I'm gone now. So I think when I came back, those emotions of, because I don't know how many farewell parties, my son had so many farewell parties. So that, I think that emotion was too strong, and I am somebody who's run by emotions. I think everybody knows that. कोई filter नहीं है मेरे ऊपर या मेरे में. So I think to come back and to know that no, I have to start again was a jolt on emotional level. Doing work or whatever to figure out ho hi liya, that's not a big deal. But I think emotionally I was not in a place to accept the fact that I'm back. So that was definitely a huge thing. So I went to Pune. I've settled down in Pune also. Yes. So yeah, probably just that. But you're settled down in Pune now? मजा आ रहा है वहाँ पे? You miss Mumbai? I am in Mumbai also. I know. I have not one but two bases now in Mumbai. Pune because I wanted to take my son out of Mumbai. Because I think
it was somewhere the same thing. I didn't want to put him back in the same school. Yeah. Because again, for me अगर इतना बड़ा जोल्ट है तो उसके लिए क्या क्या वो कैसे टैकल करेगा. Correct. So I think I wanted him to have a fresh start. So I took him out of Mumbai. Didn't want, though his friends are really cute. Mumbai आता है तो he's flooded with friends and you know all of that. हाँ. But yeah, so I took him to Pune. So he's more settled in Pune with my parents. हाँ. और मैं यहाँ काम कर रही हूँ. Yeah. But you've started working, you've started shooting. I don't know if you're allowed to talk about it. You're allowed to talk about it? No? But you're enjoying that phase? But yeah, see, like what I told people when I came back, when they said, oh, अच्छा इसको तो शायद popularity की ज़रूरत है इसको तो. काम तो जिंदगी भर किया है. काम करना was never difficult. And I was never who was run by an ambition of being the lead of a film. Yeah. और कभी try नहीं किया. I am a very content, very happy television actor. I always was. I know. So getting back to my roots was the easiest thing. Emotionally, I was not placed physically, and emotionally, I was not aligning maybe. But yeah, I'm doing something now which I'm really happy with the channel that I'm doing, with the team that I'm working with the actors I'm working with. I'm very happy to restart, let's put it like that, on the level that I would expect to, you know. Yeah. But you know, coming back and then again for work, वो difficulties आई कि यार पता नहीं अब फिर से start करना होगा काम वापस से. You know, even when I'm right now sitting in my makeup room or I'm shooting, that sinking feeling, you know, when in your heart you've given up something and you think यार ये नहीं करना है, like not that you don't like it, because you aspire to have something more. Correct. Family was something that I was too excited about. So for me that was like a very like heartbreaking thing that okay, I have to do this again. Like I said, I'm an actor. I've always been an actor. Television is my soul. It's my identity. कोई मुझे बोलता ना कि आप वेब शोज भी कर रहे हो आप, मैंने कहा नहीं, मुझे टेलीविजन एक्टर की आइडेंटिटी से कभी मत निकालना. दैट इज मेरी पहचान है. Correct. मेरा वो गुरूर है मेरा. So yeah, but even now when I sit on the set sometimes I'm like, okay, I'm doing this again, sure. Like you know, it's still not settling in somewhere, and ठीक है, as long as it takes. I'm in no rush to heal. I'm taking my time. You know, you have worked in like as a lead also, as a characters also, negative also. But what is the one thing you enjoy the most? I love playing negative. हाँ? जितना रोना धोना मैंने अपने सारे सीरियल्स में किया, very happy. The aunties would come and hug me and say, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और कैरेक्टर के नाम से वो मुझे एसोसिएट करते थे. बट मुझे नेगेटिव में जो पावर मिलती थी, you know, because you versus everybody, because you're torturing everyone, and in television थोड़ा sadist level बड़ा high भी होता है. You're poisoning also, you're killing also, and that music, and then you literally get. So especially when I was doing Good Din, I remember when I would do some scenes and they would be like, you know, ये तो South Indian हीरो की तरह ही एंटर करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार मैं डरूंगी थोड़ी ना अगर कोई हाथ मोड़ता था. तो आई यूज्ड टू नेवर डू आउच. आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ ठीक है, मतलब जैसे साउथ इंडियन वाले हीरो वाली फील होती थी. So I love that experience of playing negative. It was a lot of fun. But you should know that कि आपको लोगों ने इतना प्यार किया है उस पे, इस प्यार को क्या नाम दूँ मैं, and you know you had the broken legs उसमें. Yes. और मेरे को याद है मेरी मम्मा was like कि मुझे सबसे ज़्यादा अंजलि पसंद है. You were in that way. क्योंकि अंजलि was so righteous. उसका प्यार उसके husband के लिए आखिरी दम तक भी सही था. उसका that protectiveness to the brother, because they came from an orphan background. Everything around Anjali was so justified that it was a beautiful character, I think, which is why people loved. And of course, I was very fortunate to have worked with such outstanding Utkarsha ji, Barun, Sanal. Again, when you have great actors working with you, scenes निकल के आते हैं. Like I always say this with so much pride when I talk about इस प्यार, that actually तराफे पे भी कई लोग रोते थे कि हम मैम क्या सीन किया, मैम ऊपर से देखते थे. They used to watch like that. तो लगता था यार हमारी ऑडियंस करेक्ट है, you know. Correct है, absolutely. तो एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा होगा मैंने. I mean, people जो कह रहे हैं मैम 18वीं बार देख रहे हैं पूरा शो, हम 20वीं बार देख रहे हैं. I'm like, you know, it's like somebody saying, like I would say for Friends or Schitt's Creek, like few of my very favorite shows, कि यार मैं चौथी बार देख रही हूँ, I'm binge watching. To have your audience who's seeing you again and again is such a confirmation of love and hard work. You know, it's like it authenticates all the hard work we put. It's beautiful. Was that news correct that you and Barun is going to again
rejoin or something like that, reunite? यार हमारे fans बड़े cute हैं, you know, they have been wanting all of us back for a very long time. Yes, yeah. अब it's not possible क्योंकि हम सब I think अलग-अलग. Varun is doing outstanding work, and not that he looks down upon television. He's, you know, He's open I for think that as well. He he's said, open yes? for everything. He's Yeah, somebody yeah. who wants. He's greedy for good characters, good love, good like कि जिसको एक character देखते ही प्यार हो जाए वैसा वाला. It could be negative, positive, but वो अब he's hungry for good work. And उसको जहाँ मिलता है वो he sways like a river. जो मुझे लगता है ना यार ये मिला मैंने लिया. The way he listens to stories, he's creatively so passionate that मुझे लगता है कि he's really happy where he is. And I'm very happy the body of work he's doing. Right. You know, and I'm sure television में कुछ अच्छा आएगा, he'll be the first one to jump. He doesn't care कहाँ पे क्या है. The last person on this earth who cares about कौन कितना बड़ा आप मुझे टैग दे रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. But is there still there, Daljit, that the moment you said अभी कि he doesn't look down at TV things, is it still there that you're saying कि TV? Of course, OTTs. I remember जब I was not auditioning but in talks, and I have heard this statement so many times कि यार television actors को नहीं ले रहे हो यार, वो नहीं. I'm like, we are bloody good actors. You know, फिल्म्स में आपको दिनों दिन प्रिपरेशंस के लिए महीनों महीनों पहले सालों सालों पहले स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं. Correct. हम लोग मेकअप के टाइम पे 25-25 पेज के सीन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं. Are you doubting us? That's really not cool. Yes, we do have a very फटाफट परफॉर्म किया. अगर मुझे मैं कई बार ये बोलती हूँ कि मुझे अंतरा अगर अब परफॉर्म करने के लिए दिया जाए गुड्डन, मगर सेम स्क्रिप्ट देना मुझे, my performance will be very different because I'll be more prepared. Right. I will know the journey. I will know कि ये भी करेगी तो कहाँ ग्राफ लेके जाना है. When you Correct. so television is so tough. So Correct. but people, yeah, of course, they look down even today as we speak as a television actor. यार, we are very good actors, dude. But ऐसा कोई actors हैं जो भी movies कर रहे हैं या web series कर रहे हैं, that do it, they have talked something like bad about TVs? That I no, उतना टाइम मेरे पास टचवुड लाइफ में नहीं है कि मैं देखूं कौन क्या बोल रहा है. बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा वेयर पीपल आर लाइक नहीं यार दलजीत, वी वुड लव टू कास्ट बट यू नो दे आर नॉट लुकिंग फॉर टेलीविजन एक्टर्स. सो व्हेन आई हियर दैट आई ऑफ कोर्स पर्सनली गेट ऑफेंडेड बिकॉज इट्स माय क्राफ्ट एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर इंडस्ट्री. बट आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग. लाइक संजीदा को देखो आप, मतलब कई सारे टेलीविजन एक्टर्स हैव मेड देयर, यू नो, साक्षी तन्वर को ले लो आप, बड़े से बड़े एक्टर्स को ले लो. आई थिंक again, but I'm sure they've also had their path. Like Sanjeeda also came after so long and she did a fab job. क्या उसने हीरा मंडी में perform किया. And she's always a good actor. It's not that she's, but उसको break मिलने के लिए to be able to have a संजय लीला बंसाली से हाँ यार ये actor अच्छी है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी. As much as like it's my guesswork, but for sure. And क्या perform किया यार. But the moment you took a break from industry, तब कोई ऐसा project आपके पास आया and you regret today? यार ऐसा तो बहुत यू नो हमारी इंडस्ट्री में आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. जब काम आता है तो बहुत सारा साथ में आता है. जब नहीं आता है देयर इज नॉट अ सिंगल कॉल कमिंग. हम वेट करते हैं यार कॉल कर लो, कोई तो कर लो, नहीं करते. बस सडनली एक मुझे शो आ जाएगा कि चलो कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर रहे हैं, तब तक मुझे 3 शोज आ जाएंगे कि मैम ये भी आई एम लाइक शिट. So I can't reveal, but हाँ, literally the day I signed the contract of what I'm doing now, I got not a dream, like ऐसे नहीं बोलूँगी, but something that I would have jumped on, and I'm like, dates manage हो पाएंगे? They're like नहीं होगा मैम, इतनी dates चाहिए. I said shit, I missed it by this much, and they really wanted me, and I was like shit. So, but ये होता है जब काम आता है, बहुत आता है, और ये हमारे इंडस्ट्री वाले 100% relate करते हैं. But Daljit, how is Jaden doing now? Jaden ठीक है, मैं ठीक हूँ. हमारा बड़ा simple maths है. It's literally 1 + 1 is 2. If he's fine, I'm able to walk, talk, breathe, you know. So he's emotionally, physically, mentally in a great space, touch wood. Yes. And he is my inspiration. The way he has worked on the setback that we both had, he has probably pulled me with his tiny hands much stronger than I could have pulled him. And I feel so proud to be his mother. So proud. But do you discuss about all of the course. past things? Yeah. You know, I think या तो कोई चोरी चकारी की होती, या कुछ गलत किया होता, या किसी गलत इंटेंशन से किया होता कि हम मतलब यू नो जाएंगे और पैसे लूट के आएंगे, ऐसा कुछ थॉट होता, तो probably it would have been awkward. Today I can talk here, I can talk to you, I can talk to you off camera, I can talk to Jaden, Jaden can talk to me.
we talk about it. He has the funniest way of talking about it today, and yeah, and I think I've normalized it to a level that I said, Yeah. dude, if anybody talks, make sure you cater to whatever questions they have. It's okay, it's fine. And I think the way he has, in that tender age, I just think that it is so unfair for him to have gone through that, you know, because course. matlab, I think no child should go through no it. child should No have gone through child that. It goes is through so unfair, which is why I think the anger still sustains. और मैं कई बार चीज़ें बोल जाती हूँ, बिकॉज मैं देखती हूँ, मुझे लगता है इसकी क्या गलती है। और ऐसा नहीं कि मैंने छुपा के रखा है कि मैं तो भाई सिंगल हूँ, दुनिया को पता, जो मुझे जानता है वो जेरन को जानता है। Correct. तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं थी या क्या था। सो बहुत इंटेंशनली आप आए हो हर्ट करने के लिए, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा झैंग पैंग सब आया है कि हम इनको हर्ट करेंगे। यही हो गया ना कि लेके अमेजोन पैकेज तो नहीं होता ना रियल लाइफ, Correct, correct. कि यहाँ से चलो हमने ऑर्डर किया, हमने देखा, हमें ये नहीं अच्छा लगा, हमें तो आपको वापस भेज दिया। I literally feel like that. That's so unfair, you know. Yeah, So right, absolutely. that for a child, I think is, again, I think ऊपर वाला है। जस्टिस तो सबका होगा। आप कुछ खिला पिला के शायद जस्टिस को डिले कर लो, शायद अपने नाम पे ले आओ, बट इवेंचुअली जस्टिस तो यही है। Justice is So I there, right? truly believe that. एंड जैसे आपने बोला कि जब जब आपकी बात आपने छुपाया नहीं है कभी आप और अपने जेडन के बारे में, इट्स ट्रू, जब जब आपकी बात होगी आपसे जेडन के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, How is मुझे Jaden? रैंडमली लोग मिलते Right, हैं, and I feel right. कि of course मैंने कभी ऐसा, and I have never Right. been that person also कि मैं Yes. बोलूँ कि मैं तो 18 years की हूँ, कि मैं pretend I know, करूँ। I know. Yes, when I've been fit, I have flaunted my body. Now I am bloody like all ऐसा हो गया खा के, तो I cover myself. I have enjoyed my growth, setbacks. I have always been very loud about it. I don't care a damn कोई बोले अरे यार फिर रो रही है, हाँ यार मैं तो रो रही हूँ, आ जाओ join me. मैं तो रोऊंगी जब तक रोना है। आज I have lovely things to talk about. कल Yes. वापस whenever this topic will come, I will get the anger coming out. It's human. I'm as human as I get. If you're not interested, don't watch. If you're interested, great. I think the best part is you spoke about it. Otherwise people generally say that कि मैं बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि तब इससे ये होता है ना कि इसमें भी कोई दिक्कत होगी, इसके आपने कम से कम आकर बात though you got trolled also. Of I saw course. the message, I saw the comments on your pictures where people were saying फिर इसके साथ, and it's not, you're not the first one, there are many people around that. तो वो how did that take to you? I mean वो कैसे affect किया आपको? I've had phases again of that. I हाँ. think there was a time जब मैं आई थी, मैं 6-7 महीने मैंने कुछ नहीं बोला, because I think I was in shock and I was hoping कि नहीं यार, मतलब ये नहीं हो सकता, you know, वो ये ठीक हो आएगा सकता and we'll है। figure it out and शायद families बैठेंगी। तो जब मैं आई थी तो मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने विद्या को मेरा पहला इंटरव्यू दिया था when I had come here, and during that she was asking कि you know where's your husband, why have you come? तो मुझे नहीं बताना था कि झगड़े होके आए हैं, और तब मैं दशमी एक लॉन्च के लिए आई थी। I know Dashmi was हाँ, coming. Dashmi I was was there in there. launch. Oh, you were moment. there. Yes, हाँ. yes. तो लॉन्च के लिए आई थी, तो आई टुक दैट, जबकि टाइमिंग वैसी हो गई, मैं अगर सब कुछ अच्छा होता मैं सिर्फ दशमी के लॉन्च के लिए शायद ना आती, हाँ. लेकिन वो टाइमिंग वैसी हो गई दैट आई गॉट अ कंधा टू गिव कि नहीं मैं तो लॉन्च के लिए आई हूँ, बट एक्चुअली आई कम आफ्टर अ लॉट ऑफ मेस। Right. तो आई जस्ट केप्ट सेइंग नहीं काम करना चाहिए, मेरा काम सब बैकफुट पे हो गया, मुझे काम करना चाहिए, बिकॉज आई वाज नर्वस कि मैं क्या, कहीं इनको पता ना चल जाए। आई वाज ट्राइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन ऑल दैट। उस चीज़ को इवन सर ने भी बड़ा एडवांटेज में लिया कि देखा ये तो काम करना चाहती थी। नो भाई साहब, मैं आपका नाम नहीं लेना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि आप आएँ और मैं बोलूँ देखा मेरा तो काम हो गया, मैं जा रही हूँ, यू नो। बट it came in phases. The whole, I think, not speaking, जैसा मैंने feel किया मैंने वैसा बोला, and I continue to do that and I will do it till the end of my life, because मुझे लगता है actor, not actor, known, flop, hit, ये irrespective है। I am a human being. Yes. I am a woman, I am a mother, I am a wife who's hurting, who was hurting. I will speak when I'm popular, when I'm doing well. अभी मेरे आने लग जाएंगे, आपको देखेंगे, maybe you like my work, you'll say यार वो scene बहुत अच्छा किया, I'll speak of pride. Yes. The thing that I feel, I will speak. You like it, you don't like it, it's genuinely your problem. It's a you problem, not a me problem. But did trolling affected you or not? It did, for sure. You know, it's like a very chachi mami scenario, though I think I'm very lucky with my chachis and mamis, just saying it in a hypothetical way. Yeah. You know, it's a very कि कोई अगर मतलब कोई टूट रहा है तो आप उसको जाके 4 ताने और मार के आ जाओ, अरे ये तो इसके साथ तो होना ही था, ये तो खाना नहीं बनाती थी, अरे you know, things like that.
I think it's a very society thing, and I don't think now it's an Indian oriented thing. ये हर जगह है. मैं ऐसे बहुत फिरंगियों को भी वहाँ मिली जो उस time they were all very nice to be friends with me. Oh, you have so many followers. Oh, you're an actor. Oh, wow, wow, wow. You're so creative. बड़े awe में थे उस time. The moment they knew shit hit the roof, they all backed कि भैया हमें इससे फायदा है, हमें ये तो कल की आई कल चले जाएगी. As women, as mother, as people, they flipped, and I was like, oh, so it has nothing to do with कि इंडिया में ही ये होता है. Society is quite interesting, you know, and the moment you don't let it affect, it affects. It has affected me like shit, but I have learned to bounce back. I have learned to not stop saying what I feel, and I am a person who will end up having at least 10 people watching. उसमें अगर एक इंसान को भी हिम्मत मिल जाए, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं हिम्मत दूँ, मिल जाए ग्रेट, और वो 9 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी प्रॉब्लम. Correct. But you went through healing process also. Yes. Did that help you? It did. I think I jumped into travel very, very soon. I think the only thing that helped me was to be away from Mumbai, like I said. Yeah. Mumbai was hurting me physically. To have my friends say कि चल मिलते हैं, और किसी ने गलती से मुझे मेरे घर के आसपास बुला लिया, तो even that thought of being around that thing was physically a hurt. So I was traveling a lot, and that helped me. I traveled the world at that time. मतलब इंडिया ज़्यादा मैंने घूमा उस time. I started a travel show called My Soul in My Suitcase, which I think was really great. उसके बाद एक time आया where I said I can't travel so much. I have to find my base. I have to start earning. So then I kept it on halt. I will start it again. Then I started something called Bottoms Up Studio, जो मेरा नया एक YouTube का venture है, जिसमें हम बहुत amazing, sensible, बहुत ही outstanding team के effort के साथ कुछ stories बता रहे हैं. I'm doing something called Kathavaachak, we're doing H-Files, we're doing a lot of short films. I think you're only directing those things. I've directed also, and I am producing also. I'm writing a lot of stories also, and the team is amazing. तो वो एक मेरा venture शुरू किया, and of course daily soap, I'm back at it. So lots is work wise, I'm not worried, lots is happening. But this thing of healing is still a process going on. Did Shalin help you? कौन? Shalin Banot. I have no idea who you're talking about. Now उस इंसान का कोई message call, not that he could have done anything, but I think it would again have been great if there was a call saying, you know what, I hate the shit out of you, you took this decision, you married, you मुझे बोलता, but भाई I'm there, फोन दे जेडन को, जेडन मैं हूँ, इतना बोल देता, जिंदगी भर के लिए ना सब पीछे का वॉश आउट हो जाता कि यार he was there. वॉश आउट तो देखो नहीं होती है, अगेन हर्ट कभी पूरी तरह से नहीं मिटती है, बट अगेन इट्स जस्ट या प्रॉब्लली इसका कोई मुझे आके आज जिंदगी में यार दलजीत बहुत बुरी थी, ओके दलजीत ने मुझे ये नहीं किया, ओके दैट इज द रीजन यू चोज टू वॉक आउट ऑन योर सन. वैसे या तो देखो सिंपल चीज़ है, जब डिवोर्स हुआ था तब वो इंसान जस्ट बाय सेइंग, मुझे बहुत लोग बोलते हैं देखो वो तो कुछ नहीं बोलता है, वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो प्रॉब्लम है. करेक्ट, बोलो, ये कोई मान बात थोड़ी ना कि ये तो आपके बारे में बोलता नहीं. अरे मैं हर्ट करी तो मैं ही तो बोलूँगी. यू नो उन लोगों के पीआर के लोग शुरू हो जाते हैं, आ जाते हैं बहुत सारे लोग, मुझे कई सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे जाते हैं कि देखो देखो ये बोल रहा है. ऐसे अच्छी बात है यार. You know, him going missing or not speaking about me is not a great thing he's doing. That's his only way out now. But somebody as a man, as a human being, या तो आप 9 साल टच में नहीं रहते, I think then it would have been great. तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती. आपने 8-9 साल तक मेरे बच्चे को अपनी शक्ल दिखाई और उससे पापा बुलवाया. आप 1 महीने मिले, आप 2 महीने में एक बार मिले, आप 4 बार 1 साल में मिले. आपने अपना वजूद दिखाया, नहीं दिखाना चाहिए था. दिखाया है तो फिर निभाना चाहिए था. कि इन 9 सालों में मैंने आपको कुछ निभाने के लिए नहीं बोला, उसका रहन सहन खाना पीना सब मैं अच्छे से देख रही. मुझे अभी भी ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी, बट एक मेंटल सपोर्ट फॉर अ चाइल्ड व्हेन ही इज लुकिंग कि क्या हुआ, यू नो व्हाई वाज आई अबैंडन्ड एंड देन यू अबैंडन हिम मोर. यू नो इट्स जस्ट इट्स जस्ट क्या बोलूं. एंड नॉट दैट जेडन इज सो लाइक इट टुक हिम अ व्हाइल, पूछता भी था पहले, एंड आई हैड नो आंसर. And that time I would be angry and I would speak about it. And today I feel, अच्छा है, ठीक है, God, good for him.
Jaden is fine, touch wood. Like I said, he's my inspiration. He's doing so well. And yeah, I But don't Jaden think talks about him now? not About now, Salim? not now. No? Once in a while कभी topic कुछ आ जाए और like I said, I like him talking. I don't tell Jaden मत बात करो. हाँ. तो I think कभी अभी recently भी कुछ topic में उसने बोला था कि you know, does he call, does he message? I said, no. Oh, okay, no problem. But I think कहीं ना कहीं उसको भी एक lurking वो feel है कि ऐसा मैंने क्या किया कि you just chose to, या तो जिस दिन डिवोर्स हुआ था उसी दिन बोल देना चाहिए कि सुन, योर लाइफ माई लाइफ. ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसे भी फादर्स एंड मदर्स हैं जो आपको कस्टडी देने के बाद साकार छोड़ देते हैं, वो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. आप 9 साल के बाद नहीं कर सकते. अब वो जो कमेंट्स अभी लिखने के लिए रेडी हो चुके हैं, नहीं कर सकते. आई डू नॉट केयर, इट इज़ नॉट राइट. सो द पर्सन हु विल हर्ट विल ऑलवेज स्पीक. आई विल ऑलवेज स्पीक अबाउट इट. दे लाइक इट, दे डोंट लाइक इट, देयर प्रॉब्लम. You have to do right, yaar. It is so easy to do. I think there are fans also for you that who supports you because of speaking up, of course. right? Because See, I don't speak for getting supported or not getting. I don't care. truth, yeah. It is a fact. कोई आके मुझसे डिबेट कर ले, अरे इसको तो देखो, क्या क्या, अरे ये तो बिग बॉस में गया था, तो मैं भी तो गई थी, तो ऐसा क्या उखाड़ लिया किसी ने भी. मैं कह रही हूँ आप शाहरुख खान बन जाओ. इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप बन जाओ. मैं तो कह रही हूँ बन ही जाओ, एक दिन के करोड़ रुपए कमा लो, तो भी क्या. यूर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. You need to have a righteous decision. You need to have a righteous humanity to start with, to breathe. Right. This is as wrong as that. And not that he can contribute anything in my life. I was the one hurting. I would have probably, and even Jaden had 100 questions. But just for him to know कि hey, one person did this and the other abandoned me, like मैंने क्या किया? So that child doesn't deserve it. So my anger is as a mother. How dare you both do this to my child? And one of them comes and sits with me, and I'll rip them apart because you can't do this to my son. Right. My son gave him respect. Every time you ask Charlene if you meet him, if my son ever spoke to me in a wrong way or anything like that, always with respect, always with called him Papa, gave him whatever little that he could or I could meet. Yeah. My son has given him respect that was demanded back, you know. And so the other guy जिसका लेना ना देना, भाई साहब आपको एक बच्चा पापा बोल रहा है, डैड बोल रहा है, and this is what you do. It's so shitty, you know. So yeah, my anger will always stay, and God forbidden they come in front of me. They should really practically stay away from me because they have no answers to this. मेरे साथ कुछ गलत था, या अगर कोई भी उनमें बोले कि यार दलजीत ऐसा करती थी, fight with me. I'll sit with you. I'll apologize where I'm wrong, where you're wrong. No problem. But you dare do that to my child. Do not. You know? So yeah, it's like how that one sent some child abuse, you're cyberbullying my kid, you've not पता नहीं क्या sexual harassment ही कर दिया मैंने. क्यों? क्योंकि मैंने उन्होंने बोला शादी नहीं है, ये तो कुछ तो इवेंट है, तो मैंने वो डाल दिया, मैरिज की वीडियो डाल दी. yes, कि भाई ये बता दे क्या है. अब उसमें क्योंकि लड़की बोल रही है तो वो मैंने कॉन्सेंट नहीं लिया. वहाँ 100 लोग आपका वीडियो ले रहे हैं उस लड़की का, मैंने कॉन्सेंट नहीं लिया, और आपने सेक्सुअल अब्यूज एक मदर के अगेंस्ट डाला है. कितना फ्रिवलेस, कितना चीप, कितना डाउन. मतलब कहीं तो चेहरा देखते हुए कोई तो शीशा टूटता होगा, यू नो. सो या, सो माय एंगर इज सो वैलिड. ये वैलिड माने ना माने, आई डोंट केयर. या. So there was a general question for you. Is love enough to last relationships? No, not at all. Oh my God. I loved enough. But did it last? No. Why? Because there was no respect for the human being. चाहे वो 11 साल का ह्यूमन बीइंग है या 9 साल का है या वो 100 साल का है, आप इंसान हो ना. तो अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे आपका रिस्पेक्ट करना ही है. यही है वैलिडिटी ऑफ लव. मैं बोल दूँ हाय आई लव यू, 4 रोजेस रख दो, एक रख दो यहाँ पे, गुची रख दो, प्राडा रख दो, और फिर मैं बदतमीजी से आपसे बात करूँ. अब बोलो चल हट, आपका गुची और प्राडा कितना वर्थ देगा? नहीं दे सकता. So love in any form, whether formed in money, anything, is nothing, zero value if it is not enveloped in respect. So love is actually respect, is what I can say for sure. If anybody is falling in love, कोई नया प्यार हुआ है, चाहे 20 साल के बच्चे को हुआ या 40 साल के सेकेंड टाइम हुआ, अगर आपको रिस्पेक्ट फील नहीं हो रही, वो प्यार नहीं है भाई साहब.
वो कुछ बहुत अमेजिंग इंटेंशन के साथ हो रहा है, क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ रिस्पेक्ट होना ही है. इट्स नॉन नेगोशिएबल. Right, absolutely. But what is love for you today? I think I've forgotten. I don't think I remember that feeling. Like I said, when I'd fallen in love, I had butterflies. Because I've always been an expressive person, which is why I'm an actor also today. Right. Love was so beautiful. It didn't feel like somebody could murder love so much, जितना मेरी ज़िंदगी में किया गया है. So when I fell in love for the first time, it was love. It was butterflies. It was just wanting to sit and breathe the same air. I have been that passionately in love kind of person. Right. Respect मतलब actually एक time ऐसा आया था जहाँ मुझे बताया जाता था कुछ चीज़ें जो मुझे बाद में eventually पता चली. लेकिन मैं उन इंसान से बात करना छोड़ देती थी कि how dare you? आपने मेरे so and so के बारे में कैसे बोला? That fierce about, so protective about my love. Then एक भ्रम टूटता गया, क्रश होता गया, क्रैक होता गया. अब तो ऐसे किसी ने चूरी दिया है. But I have, I think, forgotten how it. I think the only love I genuinely feel is for Jaden. जो वही protectiveness, वही excitement कि I'm gonna meet Jaden this weekend and all of that. That love, thankfully, is protected. Also, I have realized even for my son, I don't expect back. I'm not expecting कि कल तू बड़ा होगा, तू काम करना, मैं आराम करूँगी. नहीं. अब I am a solo player, I'll enjoy. But that love is beautiful. What I feel for him, what I feel for my parents, that is the love. The that only is pure. love that I believe in. I'm so scared to use this word believe now. But yeah. और क्या चल रहा है जीत? Shooting चल रही है left, right and center. Bottoms Up Studio is doing very well, which I was really very passionate about. कि यार इतना कुछ काम किया है, इतनी amazing teams इकट्ठी की हैं. Let's do something. Let's rise together. तो Bottoms Up में जो काम चल रहे हैं, जो content हम बना रहे हैं, अभी I'm coming up with a lot of short films. So I'm very excited about my creative journey ahead. And like I said, काम तो मैंने ज़िंदगी भर किया है. तो काम करना is something is my easiest go back to. It's like my chai. Good I wali think chai. you found yourself more and your love with yourself more than after Probably. all the incident. I Probably. mean, I've seen you evolving like anything after those things happen in your life, and you've started loving more yourself. No, I think you're self-love right. has increased for you. I think self-love कभी मैंने experience किया ही नहीं था. Not that I've not done things for me. I'm not being महान. It was always Jaden. It was always अरे यार शादी कर लूँगी तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे. It was always with a slip comma of this will happen, so this will happen. Happy. Oh. It was never that it's for me. But now I think I'm building whatever I'm building now. Right. You know, whether it's financially, whether it's creatively, I'm building it for myself. Because I want to direct this. I want to direct it. I want to shoot this. I'm doing things for my happiness. I've started buying things for myself. I've started doing things that I want. So I think that I was never a center stage. And I have realized that's the only love that lasts. If you can't, and it's so rightly said, कई लोग इसको शायद एक poetic or बिचारी समझेंगे. But if you can't bloody love yourself, you can't love anyone in your life. My son needs to see me fall in love with myself to someday be happy about his life. And it is directly proportionate, if you know what I mean. Yes, absolutely. I mean, correct, true words and wise words to learn this thing in your life. Yeah, like don't go through shit that I have to understand this. Yeah. Like somebody can pick it up now, pick it up now. But in the era of social media pressure, what are the content you see? What are the content you just let them go? Like, let it go. Yeah, I can't, I don't think I can binge watch these unfortunate youngsters who think ripping their clothes apart is the way to popularity. Because one, it is very short-lived. Two, it kills a part of your soul. I'm तो saying कि आप famous हो भी गए, फिर क्या? They know you for this. एक अच्छी job कर लो, you know, side में चुटर पुटर कुछ content बना लो, have your little fandom or whatever. In case you're lacking some great talent. Right. Everybody has talent. मतलब social media ने हमें ये सिखा दिया कि हर घर में एक talent है और genuine वाला है और हमसे better है. Correct. सच बात है. Better actors, better dancers, better singers. So true. जिनको शायद वो opportunity नहीं मिली. लेकिन क्योंकि हर इंसान
एक हर इंसान को आप टेलीविजन में नहीं डाल सकते, हर इंसान कितनी होड़ लग जाएगी. So clearly lot of people will unfortunately not reach there. Then what? Show your talent ना, है ना, YouTube भी है, Insta भी है, Facebook भी है, कितना डालो, but make a life for yourself. Make a respectful life while enjoying your talent. Talent is so beautiful. I'm not saying कि अरे हम ही एक्टर तुम लोग, नहीं, आप हमसे करोड़ गुना अच्छे होगे, 100%. But this is not कि टैलेंट नहीं है, दिखना तो है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई कोई जाके बोलता है अरे इसको तो हम जानते हैं, वो फील के लिए आप कुछ भी मत करो. So when I see that, it breaks my heart because they're young girls and I have a mummy in me, I can't help. तो मेरा तो दिल बड़ा टूटता है. I think I'm a जगत मम्मी today. तो मैं लुक मेरा दिल बड़ा टूटता है, मुझे लगता है यार इनको मतलब बिठाओ मेरे साथ में बात करूँ इनसे. So I think that's not something I binge on, and because फिर comments देख लो, फिर मतलब it's a snowball of lot of bad things that follow them. I think it's like they've invited it also very very intentionally. I like to watch. आजकल मैं बड़ा स्पेस और एस्ट्रोनॉमी और इन चीज़ों में also हम रिसर्च बहुत कर रहे हैं क्योंकि मेरा एक यूनिफॉर्म एंगल शुरू हुआ है जिसमें हम बहुत सारे so my real sister is actually hosting that. She's an ex-army officer. So Captain Amrit Kaur is hosting that and she's amazing to speak and her personality. I've been her fan ever since I was a child. So we've got her on board. So we're calling that segment as the uniform angle. So she speaks about all the current issues. So अभी आजकल क्योंकि शुभांशु अभी भी आए हैं, you know, उनके ऊपर पूरा क्या क्या हुआ क्या नहीं. तो I think I'm a lot into क्या हो रहा है स्पेस में, कौन सा you know कौन सा क्या कहाँ पे गिर रहा है, कौन सा क्या रोटेट कर रहा है. I think I'm into more of that these days. दुनिया से ही अलग चीजें देखना मुझे अच्छा लग रहा है आजकल. But Big Boss 13, how was that for you? It's been long, but short journey था. It was. Big Boss 13 I think will always remain for Siddharth. Siddharth just took it and now unfortunately Shefali. I never really, Shefali was not there when I was there. But I met her very very briefly. Siddharth's funeral. So whatever, like I think it's very very sour feelings on that. And it was a great experience for me. 15 दिन ही थी but सब बोलते थे थोड़ा बोल और बोल, मुझे वो मैन्युअली आता नहीं है. वैसे मुझे कोई रोक के दिखा दे, मगर मुझसे अगर कोई बोले कि ये बोलोगे तो फायदा हो जाएगा, ये सब मुझे आता नहीं, तो ये मैं कर नहीं पाई. But it was a good experience. It's interesting to be in that house, to not know कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. People who understand the game, like now I understand. Yeah. Because I saw after that. उसके पहले कभी देखा नहीं. Yeah. But yeah, Big Boss. But I think Big Boss 13 में सारे ही you guys all there. Yeah. So you know everyone very famous have worked along. Yeah. You know काफी, but now I. तो वहाँ पे तो हाँ रश्मि, आरती, all of them, we were friends. Yeah. And actually, you know, my only, I think, one thing I definitely Big Boss 13 gets is the strength that I have as a person. Yeah. Was worth exploring. Because उनको 2 हफ्ते में लगा यार एमी में झगड़ा नहीं करती भाई साहब, लेकिन मैं झगड़ा सही चीज के लिए करती हूँ और ऐसे ऑथेंटिक लोगों को लाना बहुत जरूरी है. Which I think is Big Boss's. I know. I saw good comments coming your way. Yeah. They were saying that कि दलजीत को ले आओ वापस. I saw those comments also. See, lot of people feel अरे यार ये तो नहीं कर पाई इसलिए बोलूँ. नहीं, मैं बहुत कुछ और भी कर पाई. आती I rejoined Gooden. I did a lot of shows. मैं बड़ा कुछ किया लाइफ में यार. But ऐसा कोई co-stars है जिसके साथ आपने काम कर लिया और फिर से reunite करने का मन हो? Yeah, I've reunited with everyone. Everyone has reunited with me. I was staying in Mahalakshmi. They would travel all the way there. So I don't think ऐसा कोई है जो मुझे नहीं मिला. Like I said, I'm very fortunate with friends. People that time when I was in a hideout कि मुझे नहीं मिलना, they would show up. Like क्यों आए हो तुम लोग? हम तो आएंगे. It was like that. So in the middle of the night, in the middle of the morning, I've had friends flooding in and till today I have all of them. तो ऐसा कोई touch wood कोई wish list में कोई वैसे भी नहीं है. अगर कोई नहीं अभी तक मिला है तो wish list में होना भी नहीं चाहिए. Let's just put it like that. But any of your co-stars जिसके साथ you had a good time? I think ये चीज़ actually I can say this with pride today. मेरा चाहे वो शो मंशा हो जिसमें मानव थे, वो आज मेरे भाई भी हैं, फैमिली हैं, श्वेता कवात्रा हैं. संतान सुनैना is one of my dearest friends. Samragi is my dearest friends. इस प्यार तो लेजेंडरी है, सारे थोक में ही हम फैमिली बन गए. गुड्डन अगेन, निशांत एंड कनिका, my dear friends today. I think ऐसा कोई शो नहीं हुआ
जहाँ पे मैंने दोस्त ना बनाए हो, क्योंकि इंटेंशन कभी दोस्त बनाने का था ही नहीं. आई मेट गुड ह्यूमन बीइंग्स Yes. एंड एफर्टलेसली दोस्तियाँ होती गई. एंड yeah, I think I have too many. That's why I have a lot of actor friends. The intention was never कि actors को friends बनाओ, but हाँ. हम लोग 12-12 घंटे पड़े रहते थे तो दोस्त भी वही बने. तो करिश्मा also came out of कयामत की रात. Kayamat. It's not that we bumped into each other and we became friends. We were working and we became. So Manraj is a dear friend of mine today. So I think बहुत लंबी list. हाँ, Yeah, correct. like I said, I'm very fortunate with friends. Yes, that's good. But was I नहीं, आपका मैंने पूरे जर्नी पर रही थी तब मैंने देखा कि you were taking up the roles which were short also, but it was impactful. Yeah. Was that your conscious decision कि नहीं मुझे कुछ ऐसा ही करना है कि जिससे मैं impacted भी रहूं audience को, छोटा ही सही, but was that your conscious decision? Yeah, it's always been. Even today, as I speak, I'm only taking decisions based on the role I'm being offered. It doesn't matter. डेली सोप में तो चलते चलते आपको मार देंगे. अगर मैं कयामत में, it's the biggest example probably. I died. I was told. Ekta ma'am and everybody told me कि यार 28 episodes and you will die. I died. Yeah. They brought me back as a ghost. So daily soap में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. Of course you choose. मतलब I would not do a role जहाँ मुझे दिख रहा है कि इसमें कुछ growth नहीं है. I will never do. मतलब मैं मर रही हूँगी, मैं नहीं करूँगी. But I need to know कि इसका कुछ हो सकता है. Like I can take it to some level. So I think I've always taken a role and actually taken it to a good level. कभी मैंने ऐसा कोई role आज तक touchwood नहीं किया जिसका कोई amazing graph मुझे perform करने को ना मिला. So I've been fortunate also and I have worked very hard also on every character. Yeah. और cameo तो मैंने जितने किए they've lasted for years. So मेरा अभी तक का तो यही experience रहा है कि मैंने जब भी कोई show लिया it never really ended soon. It just went on and on. And ऐसे तुम लोगों ने promise किया था मुझे छोड़ दोगे. It has happened. Touchwood उल्टा हुआ है. Right. But again there's been a lot of love. But do you still approach for the roles? Do you call as Ekta ma'am or someone else? For Yeah, roles? they all know I'm looking. They all know. जब हाँ. कुछ होगा वो approach कर. अभी I think we've come to a point where यार please एक audition दिला दो. Touchwood हाँ. we don't have to do. या क्या हम meeting कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं. जब casting होती है और उनको लगता है यार हमें दलजीत जैसा face और एक personality चाहिए, so मुझे सामने से calls आ ही जाते हैं. हाँ. And obviously when I came they were not sure ये करेगी, करना चाह रही है तो पुणे चली गई. There was a lot of ideas which honestly even I didn't know how to tell them कि हाँ, क्योंकि daily soap मुझे sure नहीं था मैं करूँगी. But I think now also I'm choosing roles and dates in a way जहाँ मुझे weekends में थोड़ा सा ease हो जाए where I can go and meet my son. But yeah, Touchwood don't really like that way. I think इतना काम कर लिया है कि लोगों को पता है कि यार ये pull off कर सकती है, नहीं यार ये दलजीत पे सूट नहीं होगा या whatever. So I think that way quite sorted. But before going to rapid fire, quick questions. We have a rapid fire. Yeah. I want to ask you the last question that today, if you have to give some advice to the younger Daljit, what would you give to the younger Daljit? Don't run behind love. Don't run behind the concept of a perfect family because there is none. Run behind finding good human beings. Nourish yourself with honest people. But thank you so much for Thank talking to me, you know. But before going, if you can say something to your audience and our followers, it would be great. I just want to say thank you so much for always having my back. Also, like I said, be authentic, be real. If anything wrong is happening to you, speak up. Do not get scared कि अब ये लोग क्या comment लिखने वाले हैं या what they are going to do, because it doesn't matter. Be authentic, be brave, speak up, ask for help if any of you need help. Go to your chachi, mami, dadi, friend, anybody, reach out. I hope you're liking the lunch, by I'm the way. loving it. Yeah. And I'm gonna Thank you binge. so much, Bombay Adda, to have us and have the lunch date with Daljit. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah.